Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss from question number 91. In human female, only one ovum is usually discharged from the ovary at one time and it is called option A parturition, option B menstruation, option C ovulation, option D implantation. So the correct option is option C ovulation. Ovulation is a process in which human female only one ovum is usually discharged from the ovary. Question number 92. Where does the uterus opens into the through cervix? Option A fallopian tube, option B urethra, option C vagina, option D all of the choices are correct. So the correct option is option C vagina. Vagina is the place where uterus open into the cervix. Question number 93. The follicle cells after release of egg are modified to form a special structure called option A endometrium, option B perimetrium, option C Graafian follicle, option D corpus luteum. So the correct option is option D corpus luteum. Question number 94. In mammalians that are seasonal breeders, females are receptive only once a year. This is called option A a follicular cycle, option B an estrous cycle, option C a menstrual cycle, option D a luteal cycle. So the correct option is option B an estrous cycle. Question number 95. The lining or inner layer of the uterus is called as यूट्रस की जो इनर वॉल होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मायोमेट्रियम, ऑप्शन बी पेरीमेट्रियम, ऑप्शन सी एंडोमेट्रियम, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी एंडोमेट्रियम. क्वेश्चन नंबर 96. What event occurs in the menstrual cycle when the level of progesterone declines? जब प्रोजेस्टेरॉन्स का जो लेवल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिक्लाइन मतलब कि कम हो जाता है तब क्या होता है? ऑप्शन ए ओव्यूलेशन, ऑप्शन बी बिगनिंग ऑफ मेंसेस, ऑप्शन सी फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम, ऑप्शन डी मैचुरेशन ऑफ ओवेरियन फोलिकल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी बिगनिंग ऑफ मेंसेस. Question number 97. What is produced mainly by the corpus luteum in the ovary following ovulation? ओव्यूलेशन के दरमियान कार्पस ल्यूटिनम से क्या चीज़ पैदा होती है? ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम FSH बोलते हैं, ऑप्शन सी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको हम LH बोलते हैं, ऑप्शन डी क्रोनियो गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन जिसको CGH बोलते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन. Progesterone is produced mainly by the corpus luteum in the ovary during ovulation. Question number 98. From which of the following structures in the secondary oocyte ovulated? Option A corpus luteum, option B Graafian follicle, option C primary follicle, option D germinal epithelium. So the correct option is option B Graafian follicle. Question number 99. The process by which dash becomes embedded in endometrium is called option A morula parturition, option B blastocyst parturition, option C blastocysts implantation, and option D morula or implantation. So the correct option is option C blastocyst and implantation. The process by which blastocyst becomes embedded in endometrium is called implantation. Question number 100. What controls the release of milk from the mammary glands? कौन सा ऐसा हार्मोन होता है जो कि मेमरी ग्लैंड से मिल्क की जो रिलीज होता है उसको कंट्रोल कर रहा होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन सी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है उसकी मदद से जो मिल्क होता है वो रिलीज होता है या नहीं होता. ऑक्सीटोसिन उसका कंट्रोल कर रहा होता है. क्वेश्चन नंबर 101.
An egg fertilized in the laboratory and then implanted in the uterus for development is called option A cloning, option B test tube baby, option C both A and B, option D in vivo fertilization. So the correct option is option B test tube baby. Question number 102. The period starting from conception up to the birth of a baby is called option A implantation period, option B gestation period, option C extrauterine period, option D imprinting period. So the correct option is option B gestation period. Question number 103. Menopause in females comes at the age of option A 30 to 40 years, option B 45 to 50 years, option C 60 to 65 years, option D 70 years. So the correct option is option B 45 to 50 years. Question number 104. The hormone from the hypothalamus stimulating release of FSH from the interior pituitary is option A gonadotropin, option B oxytocin, option C luteinizing hormone, option D progesterone. So the correct option is option A gonadotropin. Question number 105. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसको STD बोलते हैं caused by ट्रेपोनीमिया पैलिडियम इज ऑप्शन ए साइफिलिस, ऑप्शन बी जेनिटल हर्ब्स, ऑप्शन सी गोनोरिया, ऑप्शन डी एड्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए साइफिलिस. सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर. कल न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं. स्टे